Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ubaid Kajun. Hope you are doing very well. I'm going to explain my part of the presentation as we have been given the task of 6 logical divisions of a research paper titled as Internet of Things is a revolutionary approach to future technology enhancement, and from those 6 divisions I have been assigned the logical part of IoT reference frameworks and structural architectures. If we move toward the first slide, the introduction to the IoT paradigm. This concept states by defining the IoT as an emerging paradigm that facilitates communication between electronic devices and sensors via the internet. We have integrated technologies also as well, which leverages smart systems, frameworks, and even nanotechnology to improve the sensing and processing speeds. If we move towards the 5-layer technology stack, where we have these 5 layers to handle the data and everything related to it, this model defines the core functional hierarchy, perception, and network. Data begins at the perception layer. Sensors and RFIDs as well as the barcodes are used to perceive the data from the environment, from the physical environment, and it is transported via the network layer, where we have common types of transmission mediums, for example the 3G, 4G, and 5G as well as right now. Wi-Fi, Bluetooth, and other cellular technologies are used to transmit data from physical layer to the middleware layer. And then we have the middleware and application layer, which what they does, they process this data, while the business layer is at the top to visualize statistics and plan future strategies. And on the right side we have the 4-stage data pipeline: stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. I'm going to explain each of these. This 4-stage architecture, which is used to deal massive data. It is designed specifically to handle large volumes of streaming data. Stage 1 and stage 2 focuses on sensors, actuators, and data acquisition, and stage 3 utilizes edge computing for real-time processing near the source, while stage 4 uses cloud storage for in-depth analysis and long-term management. And after that we have applications and technical hurdles: IoT intelligence core, cloud/edge. It highlights how IoT transforms traditional living in smart cities and homes, as well as in the smart healthcare, also in the agriculture and industry. If we talk about the smart cities and homes, it highlights how IoT transforms traditional living. So it focuses on energy savings, security, and smart appliances. If you talk about the smart healthcare, which includes real-time patient monitoring and intelligent traffic management to reduce congestion. In the next slide, the number 1 is security privacy, the number 2 is interoperability, the number 3 is big data scalability. If you talk about the data security and privacy, traditional protocols are often insufficient. Security must be embedded in every layer. If we talk about the interoperability means that every kind of device having different protocols can access this IoT network, process its data, and acquire the data which it is intended to need. So, the heterogeneous nature of devices must make it difficult. The heterogeneous nature of devices make it difficult for different systems to exchange information. So therefore they have to design those protocols which allow every kind of IoT network device, the node device, to access the network to gain the processing power, to gain the access to the cloud computing, and use all of the services that are provided there. After that we have big data scalability issue. The framework must support a massive number of devices without degrading overall performance. So that was it. And in conclusion, I would like to say that IoT represents a revolutionary paradigm that shifts
transforming traditional lifestyles into high-tech ecosystems through the integration of smart systems and intelligent sensors. While structured models like the five-layer and four-stage architectures provide a necessary foundation for managing massive streaming data and facilitates business intelligence, and technology has not yet reached its full potential. So that is it from my side. वालेकुम, मेरा नाम ईसा खान है। हमें एक टास्क मिला था जो कि किसी भी एआई से क्वेश्चंस करने थे। एक रिसर्च पेपर अपलोड करके। तो रिसर्च पेपर था एडवांसमेंट इन आईओटी। उसमें पहला क्वेश्चन था कि फंक्शनल लेयर्स ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। फंक्शनल लेयर्स हमारे पास 5 है। पहला एप्लीकेशन है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा बिजनेस, फिर मिडलवेयर, फिर परसेप्शन लेयर। दूसरा क्वेश्चन उसमें था कि फोर स्टेजेस ऑफ मॉडर्न आईओटी आर्किटेक्चर। तो पहला कलेक्शन, स्ट्रक्चरिंग, एज प्रोसेसिंग, चौथा जो है वो डीप एनालिसिस। ये है इसका आर्किटेक्चर सिंथेसिस। फिर तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द 6 मेजर की इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ आईओटी लिस्टेड इन द आर्टिकल। तो 6 मेजर इश्यूज जो है वो उसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आता है, इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड इश्यूज, एथिक्स, लॉ एंड रेगुलेटरी राइट्स, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसमें आता है। चौथा क्वेश्चन उसमें था कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्यों एक मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज है। तो उसमें है कि a layered defense imperative. Threat vector उसमें आता है critical infect, weak web interfaces, compromised application layer, insecure software and firmware और इस तरह के threat and system and control। फिर आता है कि पांचवा क्वेश्चन जो था बिग डेटा एनालिटिक्स। What role big data analytics plays in IoT? तो इसमें ये है कि it manages massive streaming data from IoT device for real time decision making in smart buildings. For example, oxygen smoke levels, traffic management, healthcare and industrial production system. ये स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री, स्मार्ट व्हीकल। or what छठा क्वेश्चन जो था which IoT application domains had the biggest global market share। तो largest global market shares held by industry, smart city, smart energy and smart, इसमें ये आता है। देखो, ये IoT का जो पहला असाइनमेंट है उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। रिसर्च पेपर में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो टॉपिक हमारा है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है और इसके मैट्रिसेस क्या है, और दूसरा इसका इन्वायरमेंट और ग्रीन हाउस पर इसका क्या असर है। तो 6 क्वेश्चन मैंने किए थे उससे, और ये हसन आपसे मेरे से एक एक क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे कितना समझ आएगा या नहीं। तो हसन आप शुरू करें मेरे से क्वेश्चन। So the question is, what is quality of service in IoT and its important metrics? अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारे पास ये होता है कि मतलब जो हमारे पास जो सिस्टम होता है तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको हम किस तरह से असेस करते हैं, तो असेसमेंट के लिए हमारे पास कुछ मैट्रिसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है रिलायबिलिटी, कि कितना सिस्टम कितने देर तक चलता है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है। दूसरा हमारे पास है कास्ट, उसकी कास्ट की है, और एनर्जी कंजम्पशन किया है इसकी, और अवेलेबिलिटी की है कि मतलब हर टाइम अवेलेबल होता है या नहीं होता है, कि ये पाकिस्तान इंटरनेट की तरह तो नहीं है, या बिजली बोर्ड बिजली की तरह उस तरह तो नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें। So the second question is, challenges in quality of service assessment and quality models used. अच्छा, चैलेंजेस इसमें हमारे पास ये आते हैं कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो हम ट्रेड ऑफ करते हैं इसमें से। अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा फीचर इसका ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर एक सर्विस हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे पर असर हो रहा है। लेट्स सपोज़ अगर हम देखें तो अगर हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं तो उसमें लेटेंसी आएगी, या अगर लेटेंसी नहीं आएगी तो नए हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो कास्ट उसकी बढ़ेगी। तो इस तरह हमारे पास ये आता है। या अगर हम उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं तो परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें फिर भी हार्डवेयर चाहिए होते हैं तो हमारे पास उसमें जो मसला आएगा वो एनर्जी कंजम्पशन का आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये ट्रेड ऑफ करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मतलब कहाँ चीज़ कौन सी जगह पर क्या चीज़ सबसे अहम है। तो So
The third question is relation of green technology and ये जैसे कि मैंने sustainability with IoT. अच्छा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये था कि आईओटी जो डिवाइस जो हम ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती है तो एनवायरनमेंट पर बहुत असर कर रहा है। लाइक अगर हम ईवी कार्स को देखें तो ये पावर तो उसके लिहाज से तो कम है, मतलब अगर हम डीजल वगैरह इंजन के निस्बत से देखें तो उससे तो कम है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये सेंसर वगैरह और जो चीज़ें सारी होती है तो ये एनर्जी कंजम्पशन है इसकी, तो इसका एनवायरनमेंट पर असर हो रहा है। इसी वजह से हम जो काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंपनियाँ यही काम करती है कि इसको कम से कम लोअर पावर कंजम्पशन इसका सबसे बड़ा इशू है। तो पावर को कम करने के लिए हम लो पावर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, Wahid. So the fourth question is IoT application for environment and energy management. अच्छा, एप्लीकेशन तो इसके बहुत है। अगर हम एक इन्वायरमेंट के हिसाब में मिसाल ले लें तो हमारे पास जो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, लाइक अगर हम देखें लाहौर मेरे ख्याल में लग गए तो जो एयर प्योरीफायर है वो सारी चीज़ें हो गई। इस तरह वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए तो बहुत सारे इस तरह की डिवाइसेस हैं जो मतलब इन्वायरमेंट को मुस्बत असर दे रहा है। अगर हम बाकी थर्ड जो उसका दूसरा पार्ट क्या है मैंने एनर्जी मैनेजमेंट की, तो एनर्जी मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट इसका क्या? Energy management. एनर्जी मैनेजमेंट में हमारे पास ये है कि लाइक स्मार्ट होम अगर देखें तो हम हमारे डिवाइसेस हर टाइम नहीं चल रहे होते, हम जो चीज़ स्मार्ट कर रहे हैं तो उस लिहाज से हमारे जो चीज़ है वो टाइम जिस वक्त ज़रूरत हो उसी तरफ से चलता है, और ये सिर्फ हो रहा है इसी आईओटी की वजह से सारी चीज़ें मैनेज हो रही है। अच्छा जी. तो the relationship between IoT, big data analytics and deep learning. अच्छा, आईओटी का बिग डेटा के साथ जो रिलेशन है, तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लाइक वेदर डिटेक्शन सिस्टम की, तो अगर हम सिर्फ वेदर डिटेक्शन का भी देख ले तो हमारे पास जो सेंसर होते हैं वो हर सेकंड जो है बहुत सारा डेटा जो है जनरेट कर रहा होता है। तो इसी डेटा को जनरेट करने में ये तो एक प्रॉब्लम ये हमारे लिए बना हुआ है क्योंकि उसको सारा स्टोरेज करना, और ये एक सारा मसला बना हुआ है कि इसको हम कैसे स्टोरेज करते हैं। यही सारा बिग डेटा में आता है कि जो हमारे पास सेंसर होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा था बिग डेटा का। लेकिन इसका काम यहाँ पर आ रहा है कि हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं तो इसको एआई में भी यूज़ किया जा सकता है आगे, एआई में इसको ट्रेनिंग करने के लिए ये बहुत अहम काम आ सकता है। इसका इसका रिलेशन ये है कि सेंसर डेटा इस्तेमाल जनरेट कर रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं उसको बिग डेटा में एनालिटिक्स कर रहे हैं इसकी। इस स्लाइड में हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड ट्रस्ट इन आईओटीज़ को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर पहली चीज़ है सिक्योरिटी चैलेंजेस इन आईओटीज़। इसके अंदर आईओटीज़ में से डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है, इसलिए साइबर अटैक्स और डेटा चोरी होने का बड़ा खतरा होता है। इसकी सबसे मेन वजह वीक ऑथेंटिकेशन, इंक्रीज सिक्योरिटी रिस्क। ये सिक्योरिटी रिस्क को वीक ऑथेंटिकेशन काफ़ी बढ़ा देती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम DTLS यूज़ करते हैं। DTLS जो है डिवाइसेस के दरमियान में सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के ज़रिए। उसके बाद इसमें चीज़ है ट्रस्ट मैनेजमेंट। ट्रस्ट मैनेजमेंट जो है ये भी IoT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरीफाई करता है कि डिवाइसेस और सर्विसेज रिलायबल हैं या नहीं। इससे सिक्योर कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और यूज़र को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद सेकंड जो सी हमारी स्लाइड है इकोलॉजिकल आईओटीज़ एंड इंटरऑपरेबिलिटीज़ के बारे में। इसके अंदर हम इकोलॉजिकल आईओटीज़ का मतलब है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिए आईओटी टेक्निक का यूज़। ये पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। और इंटरऑपरेबिलिटीज़ इन आईओटीज़ का मतलब ये है कि डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म आपस में कम्युनिकेट कर सके चाहे उनकी टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो। ये इंट्रोजीनियस आईओटीज़ एनवायरनमेंट में स्मूथ डेटा एक्सचेंज को पॉसिबल बनाते हैं। और थर्ड जो स्लाइड है उसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग आईओटीज़ को हम डिफाइन करेंगे। IoT सेंसर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सॉइल कंडीशन मॉनिटर करता है। ये ग्रीन हाउस और एजुकेशन सिस्टम को ऑटोमेट भी करता है। इसमें मैनुअल एफर्ट्स कम होती है, एनर्जी सेव होती है और क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव होती है। फार्मर रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आखिर में कंक्लूजन ये है कि IoTs सिक्योरिटी, ट्रस्ट, सस्टेनेबिलिटी और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज मॉडर्न सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल